हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन। ओके, चलिए जी, आज मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम we will be reaching almost the end, not ending today. इंशाअल्लाह एंड तो मुझे उम्मीद है कि हम कल करेंगे। बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट आवर क्लास टुडे, मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये देखिए आपके सामने मैंने व्हाट्सएप वेब खोला हुआ है। मैंने पिछले टॉपिक के जितने भी क्लास नोट्स थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नंबर करके अब मैंने उनको सेंड होने पे लगा दिया है। सम ऑफ देम आर लार्ज, लाइक पहला जो रिसीव हो गया है वो 1 MB का है, फिर अगला 6 MB का है। सो इंशाल्लाह यू विल बी रिसीविंग देम, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ एन आवर, ऑल ऑफ देम. The last one seems to be slightly bigger, but in any case, inshallah, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक के आपके बिल्कुल भी सेंड नहीं किए हुए थे, तो मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में सेंड कर दिए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि आप में से अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ सेलफोन में ये क्लास नोट्स रख रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करूंगा कि आप अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम पे अलग फोल्डर्स बना के इनको एक ऑर्डर में अपने पास रखें, ताकि it's easier to go back to them when you want to do the revision instead of scrolling through all of your cell phone documents and all of that stuff. Okay, चलें जी, so sampling questions. चलें जी, आज हमने अपनी बात शुरू करनी है with the idea of correlation, inshallah. So I have two things, inshallah, as my objectives today. The first thing is we are going to look at, again, it's a slight flavor of paper 5 because there are two things that we're going to do. लेकिन मैं आपको आपकी एग्जांपल आपके बुक से ही दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ तो बहुत इजी है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिकली द सेकंड मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, और कल इंशाल्लाह हम कंजर्वेशन वाली चीज़ से इस टॉपिक को होपफुली इंशाल्लाह एंड करेंगे. So I slightly touched upon the idea of correlation yesterday. I am going to begin with the same idea, okay? Giving you very basic examples of what that is supposed to be. And then inshallah, we will jump on to, what do you say, an example from your own textbook. Okay. Now, correlationship, let me write that down for you. Battery kitni है laptop में? Check out first. ठीक है. So this is correlation. I don't know. Orange ink, I don't like it. Correlation. ठीक है जी. So let's try and understand what I mean. इसकी definition, of course, कभी भी नहीं वो आपसे पूछेगा, but just to make you guys understand, it is a correlation is a relationship between two variables. Of course, anything जिसको हम variable कहते हैं, by definition it can be varied, okay, where they co-vary. That's where this word is coming from. Co-vary, co का क्या मतलब होता है? Together. और vary का मतलब होता है vary करना, ठीक है? Co-vary or change, if you like, in parallel. क्या मतलब in parallel? यानी कि if one thing increases, the other thing also increases. So variable 1 increases, and at the same time variable 2 increases. ठीक है? और अगर increasing one thing के साथ साथ दूसरी चीज भी increase हो रही है, so we say that this is a positive correlation. This is an example of a positive correlation. ठीक है? और अगर, so that's scenario 1. Scenario 2, if variable, and I will just give you a non-biological example to explain this idea. Let me just write this down first. So if variable 1 is decreasing, so that at the same time variable 2 is increasing, then this is a classical example of what is known as a negative correlation. Okay.
and the third is no correlation. ठीक है, और इसकी मैंने पिक्चर आपको कल भी दी थी. Let me give that picture again here so that we can understand this idea in a good way. So going back, pictures, biodiversity, correlation. Yep, that's the three. These are the three graphs. Okay, so ठीक है जी. इनमें से if you're looking at the first graph, then this first is a positive correlation. अगर ये virtually all of these points they literally fall on this point, then it will be a totally positive relationship, which is virtually not possible. Okay, which is virtually not possible. So that's not what we're going to see. And this, of course, is a negative correlation, and this, of course, is no correlation. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक नॉन बायोलॉजिकल एग्जांपल दैट विल मेक सेंस. Faryal, you just joined. Quickly, we're discussing about this statistical idea, which is correlation, which means that there is a relationship between two variables in a sense कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता है तो at the same time second वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है. That is positive correlation. And if one variable is decreasing, the other is increasing, that is negative. And there are times when change in one variable, at the same time, the other variable is not changing. Okay, so these are the three scenarios. इस ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं लीनियर सिनेरियो है, लीनियर कोरिलेशन, which is only going to be possible in a very idealistic scenario. ठीक है, so that's known as linear. Now let me give you, and by the way, ये जो ग्राफ है इसको हम स्कैटर ग्राफ कहते हैं. As you can see, the points are literally scattered. Now अगर मैं आपसे ये कहूं कि we have, so for example, let me give you a non-biological example. The two variable one जो है, that is, let's say arm length कर लेते हैं, चलें, arm length, आपके बाजू की length. Okay, and then variable two बच्चों, for example, is let's say the leg length. Okay, लंबी टांगे और लंबे बाजू, or sorry, leg length. What did I just write? Yes, leg length, I'm sorry. So इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, leg length. अच्छा, अब now listen to me very carefully. There is a potential misconception that students have, and I want to clear that. If you are understanding, bachcho, please listen carefully, this is important. if you are understanding about correlations, the following कि variable 1 के change होने की वजह से variable 2 change हो रहा है. I just use the word की वजह से. So if I am assuming that the increase in variable 1 is the cause of increase in variable 2, then actually this is not what correlation is. Let me ask you something. अगर मैं आपसे ये कहूं कि लोगों के बाजू इसीलिए लंबे होते जाते हैं क्योंकि उनकी टांगों की लेंथ लंबी हुई जाती है. Do you think this is a valid reason? How would you answer to this logic? One by one, let's talk about this. Rabia, अगर मैं आपसे पूछूं, can you counter argue against the following, that the increase in the arm length is the cause of increase in the leg length? How would you argue against this? So it is not, they're not correlated, I think, because if the person is like the age increasing and the person is growing, because of that, both the variables are increasing. Taking, is arm length the cause of leg length? No. There are other factors. Okay, which are causing this increase. So it's basically, the reason I'm mentioning all of this is it's just because it's just that the two go together with increasing body size. We can't say that one is the cause of the other. So the point that I'm trying to make here is that there is no, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है. चलिए कहाँ गई टेक्स्ट बुक, खोल के रखी है मैंने. ओके, yes.
Okay, this thing is very important. Let me cut paste this portion for you. इसको मैं आपके नोट्स पे पेस्ट करता हूँ ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें. अक्सर बच्चों को ये आइडिया समझ नहीं आता एंड दे कांट जस्ट मेक सेंस ऑफ दिस कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से ये कॉजल रिलेशन नहीं है. तो ये a non-biological example usually works wonders. Okay, I mean remember this example of arm, leg and leg length. यानी कि the reason why अगर किसी का arm लंबा है is not because उसकी टांग लंबी है. There can be other factors. So the point that I'm trying to make is that remember that correlation does not indicate causal relationship. This is very important. ठीक है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही, एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट दैट कोरिलेशन का ये मतलब नहीं है कि ये जो मैंने इक्वल टू का साइन डाला, दिस इज नॉट द कॉज. दैट इज नॉट द कॉज. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ the next thing before I proceed on to the question is how do I quantify the degree of correlation? कोरिलेशन में दो दफा आर आता है. डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम मेजर करते हैं between two variables, of course, by calculating what is known as, so we the term is correlation coefficient. Correlation coefficient क्या मतलब? Well, it is represented by the symbol small r, और इसकी जो values हैं they vary from 0 till 1. Now what does that mean? 0 का मतलब है no correlation whatsoever. ठीक है. और as we increase from 0 to 1, so 1 is representing complete या linear correlation, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ग्राफ में बताया था, complete slash linear correlation. Okay. All right. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम आर्म लेंथ और लेग लेंथ की बात ही कर लें, अगर देयर इज अ कंप्लीट कोरिलेशन तो हम कहेंगे कि एज द आर्म लेंथ इज इंक्रीजिंग so is the leg length. But at the same time we need to give the disclaimer that the increase of the arm length is not the cause of the increase in the leg length. There are other genetic causes, nutritional causes. So we just have to give that disclaimer that this is not the cause, it's just the way how it is there. That's how they are related in a sense. Okay. अच्छा जी. Now what I'm going to do is we have, अब देखें जब भी हम correlation की बात कर रहे हैं बच्चों, we will always be talking about two variables and we will be studying their relationship in terms of correlation. So there are two statistical tools that we will talk about. Okay, the first one is known as Pearson's correlation coefficient. ठीक है. ये हम कब यूज करते हैं? when it is used when both the variables are, when we have a quantitative data. Okay, quantitative of my spellings, I'm sorry, quantitative, I'm sorry, ये मैंने गलत लिख दिया, spelling आप देख लीजिएगा खुद ही. when the data is quantitative, ठीक है. For example, like you have mass, for example, like you have length, for example, like you have area, and so on and so forth. Okay, and there should be normal distribution. Okay, यानी कि कोई outfit नहीं होना चाहिए. यानी कि for example अगर हम mass देख रहे हैं तो वो normally distributed हो, वो बहुत outrageous सी value ना हो. Then we use Pearson's correlation coefficient, and it is usually for either positive correlations or it is for negative correlations. Usually, you get the Pearson's correlation. The second statistical tool, and I will tell you the formula for this, inshallah. You don't need to worry about the formula. आपको एग्जाम में वो फॉर्मूला में क्या क्या चीज किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है उसने वो भी दिया होता है. सो यू डोंट नीड टू गो इनटू द हैसल ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दैट. द सेकंड इज, जो कि आप लोग में से अक्सर लोग खासतौर पे जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स वाले हजरात इधर बैठे हैं उनको काफी इंटरेस्ट होगा. दैट इज द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो शायद आज की क्लास में मैं आपको समझा पाऊँ कि कैम्ब्रिज वालों ने क्या किया, गंद मारा. खैर उनका गंद तो कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन बहरहाल there's a degree to which we can understand. So that's known as Spearman's rank correlation coefficient. So these are the two statistical formulas, if you like, that we will, and of course this is used for
correlation between two variables, लेकिन it does not necessarily have to be relationship linear नहीं होता है इसमें. ठीक है, there's no यानी कि there's no positive or negative, and usually the data is not normally distributed. What do I mean the data is not normally distributed? Well, मैं आपको example दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. Why am I telling you features against both of these formulas? Because in the exam, usually वो आपको एक scenario देके पूछ लेता है, which formula do you think you should use? So if the data is uh, uh, like a normal distributive data with quantitative values, of course quantitative values Spearman rank में भी होंगी, लेकिन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल 1 होगा, फिर 32 होगा, फिर 74 होगा, फिर 3 होगा. आई मीन दैट्स यू कैन क्लियरली सी is clearly an example of a not normally distributed data. ठीक है बच्चों, are we good so far? I hope I haven't made things very complicated. I mean, I'm trying to make things very simple. Let me quickly summarize. We're looking at the idea of correlation, which means we see that as one thing increases, the other is maybe also increasing or decreasing. It's just a relationship that we're seeing, it's not the cause. So you can have three scenarios, either a positive correlation or a negative correlation or no correlation. And then, of course, you have the जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन का, इट विल बी बिटवीन दीज टू वैल्यूज 0 and 1. वो हम एग्जांपल उसके अभी देखते हैं. अगर जीरो के करीब करीब आंसर होगा, if the answer is near to zero, we will say that the correlation decreases. If ideally it's zero, then there's no correlation. And if it is ideally one, then we say it's a complete slash linear. Yeah, but if it is somewhere around 0.8ish, 9ish, we say it's a very high correlation. Okay. And then of course you have the following two formulas, which we use to calculate the correlations. Of course, how do we decide which one to use? It depends upon the data. Now, what I'm going to do is, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों जो आखिरी टॉपिक है, that is topic number 19, and followed by topic number 19. The next topic is उन्होंने P2 label किया है इसको, practical 2, which is technically paper 5. So this is page number 501. If you want to note this down for your reference, ये जो green book है आपकी bio की, Cambridge वालों की, ये उससे है. So I'm just going to show you कि किस तरह इस formula को हम use करते हैं. I'm not going to go into all of the detailed statistical calculations, क्योंकि एग्जाम में उसने आपको bits and pieces दिए होते हैं और you have to just complete it. So ये आपको एक डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे वो पूछ रहा है कि which formula do you think you should be using? Well, if you look at this graph, this is a scatter graph. Okay, let me make it right here. This is a scatter graph, okay, which basically means that we have plotted values for number of individuals of species Q against the number of individuals of species P. As simple as that. Okay. Okay. Now we need to understand that if we try and observe this distribution graph, तो ये हमें कुछ इस तरह का जो है वो trend दे रहा है, which is maybe indicating some sort of a positive correlation. But the point is, which statistical tool should we be using? The answer is Pearson's linear correlation. Why? Because the data looks like it's normally distributed. अगर आप टेबल पे देखें तो ये आपको देखें 20 है, सॉरी 20 है, फिर 20 20 22 21 17 16. So it's actually not really absurd in terms of कि एक 10 है और फिर एक 78 है और फिर एक 102 है. Looks like a normal distributive data. Okay, so therefore we will use Pearson's linear correlation test. Pearson's linear correlation का formula क्या है? Please आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है. This is the formula. Do you need to remember the formula? Come on, who will answer this for me? No. No, you should not need to know the formula. Okay. Do you want me to prove that you don't need to know the formula? Well, I really want you to ask me कि सर हमें बताएं कि formula हमें क्यों पता नहीं होना चाहिए. Well, let's go to the syllabus and see what's the case. Okay.
Okay, great. Point number E देखें बच्चों. Use Spearman's rank correlation, that's one, and Pearson's linear correlation, number two, to analyze the relationship between distribution and abundance of species. And abiotic, the formula for these correlations will be provided. Wow, that's great. So guess what? You don't need to know the formulas. Lekin Bharat, you need to understand how the formulas work. So therefore, I have this for you on the screen. Now, summation of x and y, फिर small n है, फिर small n नीचे भी है, फिर x and power x and y. What the hell is this? So let's see what is this. देखें, आप clearly देखें, you can clearly see two things, x and y. These are two variables that are under study. Since if you look at the big picture, correlation is all about understanding what correlation is between two variables. So जो variables हमारे पास हैं जिनको हम देख रहे हैं, they are basically uh, the variables that are under consideration. Now R is the correlation coefficient जो आप calculate कर रहे हैं, ठीक है. X is the number of species in P quadrate. उसने quadrates में basically ये इनको number calculate किया था. Quadrate की detail में आज मैं नहीं जा रहा, हमने कल बात कर ली थी. So I mean, since they're studying, so they must have used some sort of sampling in order to see this. Y is again number of species Q. N is the number of readings. ये जो x के ऊपर ये sign लगा होता है, this is the sign of mean number of species. Then y is mean number of species Q. और फिर ये sx and sy is standard deviation. What exactly is standard deviation? एक आपका होता है mean. Mean value कहते हैं, I hope all of you know what mean is. चले जी, एक हम काम करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, शायद थोड़ी ख़वातीन के लिए एम्बैरसिंग हो जाती है, मैं आपका वेट नहीं पूछूंगा, लेकिन चलें अगर मैं अपनी बात करता हूँ. 2008 में मेरा वेट था 125 kgs. यस, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यकीन कर लें, मैं काफ़ी भारी हुआ करता था. फिर आई थिंक समवेयर इन 2010ish यूनिवर्सिटी में आकर सब कुछ जोश चढ़ता है, आई वेंट टू 90 kgs. और इस वक्त 2020 में फिर कुछ ज़रा खाबे शाबे काफ़ी हुए हैं, आई एम एट 109 kgs एट द मोमेंट. ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरा मीन वेट क्या है ओवर दीज ईयर्स, then what will your answer be? 125 plus 90 plus 109 divided by 3. Okay, I hope you understand, all of you know what mean is. तो इस मीन, जो भी मीन की वैल्यू आएगी, उससे अगर वैल्यू थोड़ी डेविएट करती है either towards increase or towards decrease, that idea is known as standard deviation. Again, I'm not going into statistical details of all what that is, but generally I'm telling you. अच्छा, फिर ये लंबा चौड़ा टेबल है, और ये लंबा चौड़ा टेबल इज एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट फ्रॉम दिस साइड. क्वाड्रेट्स हैं, यानी कि पहले क्वाड्रेट में जो नंबर ऑफ स्पीशीज पी थे वो इतने थे, वाई जो थे वो इतने थे, एंड द सेम फॉर 10. और फिर एंड पे एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है. यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया हुआ है दोनों एक्स का और वाई का, और n is number multiplied by xy. I mean, honestly, the table at the first look looks very horrible, but if you really look at it, it's actually not horrible. Simple चीजें, और ये टेबल पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी ये फुल कैलकुलेशन वो एज अ क्वेश्चन नहीं देगा. उसने आपको ये टेबल दिया होगा, मे बी बीच में से एक वैल्यू मिसिंग होगी, यू हैव टू कैलकुलेट दैट. What I want you to understand is that when you put all of the values in this formula, the answer, can I assume that you guys are comfortable doing this, putting values of x and y and minusing and subtracting? ये भी समझा दूं, क्या ख्याल है बच्चों, बताएं जरा. कहते हैं तो बता देता हूं, I have no issues. But this is basic maths, grade 6, 7 maths. Is everybody comfortable with this? अच्छा, खामोशी से क्या समझूं? Rabia, Khadija, and Faryal, come on. Am I embarrassing you with this question? ठीक है, कराऊं कि डिवीजन जी कैसे? सर, ठीक है. जी जी, इट्स फाइन सर. Okay, thank you, I appreciate it. Acha, the point that I want to reiterate is look at the value of correlation, 0.81. What does this value indicate? Let's come back to our OneNote. As I said, any value that is nearer to 1 indicates a very strong
correlation if you like. Okay, so इसका अगर हम ये बुक आपकी टेक्स्ट बुक में देखें, उसने इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि a value of positive one means total positive correlation, a value of negative one means total negative correlation. I'm sorry, मैंने आपको जीरो तक बताया था, माइनस में नेगेटिव की साइड पे जाता है और जीरो का मतलब नो कोरिलेशन. लेट्स डू दिस करेक्शन. If I go -1, then that is negative correlation. Negative correlation का क्या मतलब है? One thing increases, the other thing decreases. Okay. So it says that since here the value of r lies close to 1, which is 0.8, so we can say that there is a positive linear correlation between the number of species P and number of species Q. That being said, we have to understand that the number of P is not increasing because the number of Q is increasing. This is not a causal relationship. It's just the way how it is. They're correlated in a sense कि अगर एक increase कर रहा है तो दूसरा भी increase कर रहा है. This is not the increase in one is not the cause for increase in other. I really hope you understand this idea that it's not a causal relationship. It's just a relationship as it is. ठीक है बच्चों? So that is what Pearson's linear correlation will be. Now the second formula is Spearman's rank correlation. और मैंने आपको बताया है Spearman's rank correlation हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो डेटा है वो जरा काफी अजीब और गरीब किस्म का हो. 1, 32, 74, 3. So look at the table that they've given. So look at this table. Again, this is page 503 just for your reference. देखो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 इसमें नंबर क्या आ रहा है. एक में 38 आए हैं आर के स्पीशीज, अगले में बेचारे सिर्फ 2 आए हैं, फिर 22, फिर 50 and 28, then again 8. So you can clearly, I want you to compare this thingy with this thingy. I mean, look at this 21 20 22 17 16 23. क्या मैं कह सकता हूँ they're nearby? I mean, can you honestly, let's not exaggerate, but can we say that this is normal, looks like a normal distribution? What do you think? जबरदस्ती नहीं करना, मुझे खुद बताएं. Look at these values and then look at these values. Look at these values: 38 2 22 50 28 8 42 13. I mean, clearly you can see a stark difference between both the values. And the same is for R. You have 24, फिर 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है. अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, इसके फॉर्मूला is this lovely formula. Again, you don't need to go into the hassle of remembering all what this means, but we need to understand what individual things in the formula are. Everybody knows what's 1. Everybody knows what 6. We know what the summation. ये D क्या है? D is the difference. Okay, difference between what? Well, डिफरेंस बिटवीन द रैंक. अब आपको समझ में आएगी ये आपकी जो रैंकिंग उन्होंने की थी ये कैसे की थी. आई वॉन्ट यू टू लुक एट द सेम टेबल नाउ, जिसको पहले मैंने ब्लू कलर से पॉइंट किया है और उस पर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ. चले मैरून कर लेते हैं. मैरून कलर से नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ आर की रैंकिंग करनी है जी हमने. कैसे करेंगे बच्चों? आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस थिंग वेरी केयरफुली. Is everybody with me? Is everybody paying attention? Come on, give me yes. ये बहुत important चीज है, इसको समझ लें. It's very easy but yet very important. So please try and understand. Come on, is everybody with me? Okay, good. Shabash. अच्छा जी. Now, if you look at these numbers, I want you to find the smallest value in this number of species R वाले टेबल में. ये जिसको मैं पूरा मैरून कलर से आउटलाइन कर रहा हूँ, इसमें मुझे बताएं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? बताएं. सॉरी, 2. शाबाश. चलें उसको पहला रैंक दे दें. पहला रैंक दे देते हैं जी. चलें उसको रैंक मिल गया जी, उसको पहला. ये साथ ही मैं रैंक भी लिख रहा हूँ, इसी के आगे लिख रहा हूँ. अच्छा जी, 2 के बाद, आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया. ठहरे, इसको यहाँ पे 1 होना चाहिए. इसको ठहरे मैं रब कर दूँ. यप, देयर यू गो. ओके, ग्रेट. अच्छा जी, 2 के बाद कौन सी है? बारी बारी बताएं. राबिया, 2 के बाद कौन सा है? 8. 8. चलें, तो इस सारे की मैं इसी तरह रैंकिंग करने लगा. और 2 के बाद जो है वो 8 है, और फिर 8 के बाद उससे बड़ी वैल्यू 13 है, इसको थर्ड रैंक दे देते हैं. फिर 20 को फोर्थ दे देते हैं. 20 के बाद 22 है, आई थिंक. यस, लेट्स गिव इट 5.
and then let's give 28 as 6, and then 38 as 7, and then 42 as 8, and then 43 as 9, and then finally this as 10. ये जी होती है रैंकिंग, ठीक है। तो दोनों की अगर आप रैंकिंग करेंगे तो ये देखें उसने रैंकिंग करके, एक्सक्यूज मी, रैंकिंग करके इस पूरे टेबल को दोबारा रीड्रॉ कर दिया आपके लिए, और उसने नए कॉलम्स इंट्रोड्यूस कर दी। एक ये वाला रैंक है फॉर स्पीशीज आर, और एक ये वाला रैंकिंग है फॉर स्पीशीज क्यू। So you can see it's the same. This is basically the ranking that they've done. So you understand what do you mean by ranking? ठीक है। अब ये जो रैंक है, ये रैंकिंग यूज होनी है बेसिकली इस फॉर्मूला में। सो इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, it says sum of d squared is the sum of differences between the ranks. Okay, so again, let's look at the big picture. Let's not get confused. We are looking at the relationship of two variables. Okay, the correlation, sorry, not the relation, the correlation. तो दो वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, दो के रैंक्स की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों का we need to take the difference between the ranks of the two samples. Okay, the sum of the squared. So this is the value that basically at the end we want to calculate. Okay, and then जब हम इसको इसके formula में put करके सारी value निकालेंगे, again I'm skipping the mathematical portion. I mean honestly this is something that you can look into, क्योंकि rocket science नहीं है। यहाँ पे जो value again आ रही है that is 0.93. Again this number is correlation coefficient, and since this is closer to value 1, the more likely it is that there is a genuine correlation. But again, that being said, it does not indicate a causal relationship. हाँ जी, कौन कितना confused हुआ है कि is everybody clear about the use of these two statistical tools? Okay, I'm assuming that you're clear. Okay, so okay, alhamdulillah. चलें जी, we're 34 minutes into a lesson. Let's quickly take a 1-minute break. और उसके बाद जो अब रह गया वो तो बिल्कुल बच्चों काकों वाला है, तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेते हैं। I'm ending the session. Please rejoin in a minute. Go and take a break, have some water, and then come back.